एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. Sensex slides 34 points to close at 72,152. Nifty settles 1 point up at 21,931. India improves 16 places in World Bank's Logistic Performance Index report 2023, occupies 38th rank. And fuel prices kept steady in India despite global turbulence, says Energy Minister Hardeep Singh Puri. सेंसेक्स 34 अंकों की गिरावट के साथ 72,152 पर बंद। निफ्टी 1 अंक बढ़कर 21,931 पर बंद। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत ने 16 स्थानों का सुधार किया। अब भारत का स्थान 38वां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें स्थिर। और शेयर बाजार का हाल जानते हैं। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज सपाट कारोबार हुआ। बीएसई सेंसेक्स 34 अंक टूटकर 72,152 पर बंद हुआ। निफ्टी 1 अंक बढ़कर 21,931 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 1.31% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.38% की वृद्धि हुई। The key domestic indices had a flat session amid mixed cues from global share markets. The BSE Sensex lost 34 points to close at 72,152. The NSE Nifty climbed 1 point to settle at 21,931. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.31% and the small-cap index gained 0.38%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 15 companies appreciated while 15 companies declined. SBI climbed 3.78% and JSW Steel gained 2.12%. Axis Bank and Bajaj Finance both rose above 1.7%. On the other hand, Power Grid and Tech Mahindra both declined around 2.3%. Infosys lost 2.06%. TCS fell 1.22% and NTPC slipped 1.11%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors registered gains while 6 witnessed losses. Realty sector gained 1.96% and telecommunication rose 1.18%. Consumer discretionary advanced 0.89% and financial services added 0.76%. On the other side, IT declined 1.18%, tech lost 0.97% and services slipped 0.81%. The overall market breadth was positive as shares of 2,262 companies appreciated while those of 1,610 declined. A total of 85 company shares remained unchanged.
और रुपया का हाल जानते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 82 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.05 पर चल रहा था। Mr. Singh, we saw today that the markets opened in the green. They took cues from overnight from the US markets and then from the Asian markets. But then during the day, the markets lost momentum and almost, flat close we have seen today. On Monday, this is the third day of, third session of the week. And Monday we saw that the BSE declined. BSE, closed in the negative. Yesterday, the BSE closed a little more than 0.5%. So what is happening in the markets right now? See, Anubha, if you can see in overall, if you see the market breadth, as you said also for today was positive. I think largely it is positive. And the stupendous budget, which in the interim budget also, even if it is interim in nature, the vote on account which was presented by Ms. Nirmala Sitharaman, the finance minister. So I think that has also given a fillip that government is very serious as far as the economic policy of the country, the fiscal roadmap. They have kind of stuck to that. Not only stuck, I think this government has kind of bettered it. So this financial year also we are seeing that we will be improving against what the target was in terms of fiscal deficit. And if you look at other economic parameters also, whether it is inflation or whether it is in terms of availability of essential food items or macroeconomic parameters, the productivity linked incentive schemes. So overall, I think the entire picture in terms of economy, macroeconomy fundamentals is positive, and that positive breadth is also getting reflected to a large extent in the market. Markets are already at a all-time record high. We are almost close to that. So what is happening also, I think when people are putting in money, sometime obviously you put in money to reap in benefits. So I think sometimes people also try to, it is also kind of profit making. Yes. So that also leads to, but it isn't something which is a very sharp fall in the market, something like that. Plus I think the level of retail participation, the way it is growing in India, I think a day is not far off when we won't be much affected by foreign institutional investors selling. Even if they sell, the markets fall, but there are people ready to come into the market. So I think there is nothing to worry. India is a growth story, so success story continues. So I don't think there is much to anything for concern. सिद्धार्थ जी, मैं 2 सवाल जरूर करना चाहूँगा। एक तो इस सप्ताह आप क्या रुख देखते हैं, दूसरा ये कि आपने अंतरिम बजट की बात की। विकसित भारत हमारा लक्ष्य है और बुनियादी ढांचे पर सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और अभी हम कुछ दिनों पहले की बात है कि भारतीय शेयर बाजार जो है 4था सबसे बड़ा शेयर बाजार हो चुका है। आप किस रूप में देखते हैं आगे भारतीय शेयर बाजार को, और जैसा कि मेरा पहला सवाल था, आने वाले सप्ताह में क्या स्थिति रहेगी, कैसी चाल रहेगी, इसको भी बताएं। नहीं, देखिए विभूति जी, जहाँ तक ओवरऑल ब्रेथ है वो पॉजिटिव ही है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बाजार का वो स्वभाव है या नेचर है, तो थोड़ा बहुत कुछ ग्लोबल क्यूज़ हों या कोई ऐसा अनसर्टेन, क्योंकि एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि अब हम लोग कपल्ड डिकपल्ड नहीं, अब हम भी ग्लोबल जो बाज़ार है उसका एक हिस्सा है। तो कभी कोई ग्लोबल इवेंट होता है, कुछ जैसे आप देख भी रहे हैं, छोटे छोटे अब वॉर कह लें या जो भी कॉन्फ्लिक्ट कह लें, या रेड सी में जो अभी उथल पुथल मचा हुआ है, तो कभी कुछ वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट उन चीज़ों से आ सकता है, या कोई और डोमेस्टिक कोई डेवलपमेंट हो जाए। जैसे आजकल किसी एक वॉलेट के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, जो फिनटेक कंपनी है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, तो कुछ कभी उन चीज़ों से भी बाज़ार पे एक छोटा मोटा असर आता है। बट ओवरऑल जो आपने बोला कैसा रहा एक बाज़ार, मुझे कोई मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के कोई फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से कोई सडनली कोई सरप्राइज़ होगा, बड़ा सरप्राइज़। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने पूछा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर ही रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सरकार का शुरू से जब से सरकार आई और जब से कोविड आया, खासकर जब ऐसा लगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा ड्राई कर रहा है या वो लोग पीछे हट रहे हैं, तो उस समय सरकार आगे आई, क्योंकि एक अनिश्चितता का माहौल था। सरकार आई, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत बड़ा फोकस किया और उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। हम लगातार 7% की जो ग्रोथ आपको दिख रही है हिंदुस्तान में इकॉनमी में,
तो मुझे लगता नहीं, और इस इंटरिम बजट में भी ये फोकस बना के रखा है सरकार ने, बल्कि इस साल आप देखेंगे तो हम 10 लाख करोड़ की जगह थोड़ा सा कम खर्च कर रहे हैं, 9.5 लाख करोड़, बट 9.5 लाख के ऊपर हम अगले साल 11,000 करोड़ खर्च के, तो तकरीबन जो अपसाइड है वो 17% के आसपास है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार का वो जोर बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता, और बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट अभी मुझे लगता है जुलाई बजट में दोबारा आएंगी। We will continue with this discussion, but after a short break. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. Today we are joined by senior journalist Siddharth Singh. Siddharth, I want to draw your attention to the IT sector particularly. You know, the IT sector today we saw it declined 1.18%. Among the top losers today was also 3 tech companies, Tech Mahindra, Infosys, TCS. Again, I would like to know what is happening, because a little while ago it seemed that the IT sector was on the way, you know, it was on the recovery path, but again now we're seeing that, you know, it's not so. I think, Anubhav, as you rightly said, I think it would be wrong. I think only yesterday there was a pick in IT stocks. So I think it depends on the day. I think, sometimes people want to book profits. I don't see any major, for some time IT sector has been taking the beating, because I think probably the way things are in the global world, exactly. US slow down, Europe slow down, so obviously where are they getting their client from? So once US, Europe, you see the world across slow down, so that impacts obviously translates to our own IT companies also. But having said that, I still feel, since we are having a lot of domestic demand also, so I think our own big companies are also getting a lot of businesses within the country. Plus, yes, things are also kind of US, etc. also is looking up. So there may be a temporary blip, but overall, I think even for IT companies, there's nothing to worry. Yes, they are already at a very high level. So if you are expecting that you will again get those kind of levels year after year, so I think that one has to be. The margins may be low, but not all is lost. Yes. सिद्धार्थ जी, ब्रेक से पहले आप भारतीय शेयर बाजार के सकारात्मक रूप पे आप चर्चा कर रहे थे। देखिए, जाहिर तौर पे जो पिछला साल रहा है, हमने देखा कि यह बात सही है कि अगर विश्व में कोई संकट होता है तो उसका सीधा असर पड़ता है, लेकिन यह भी एक तथ्य हमारे सामने आया कि भारत पे इसका असर उस तरह से नहीं देखा गया। हमने अच्छा किया, शेयर बाजार जो है लास्ट ईयर का अच्छा रहा। अब हालत यह है कि चीन में निवेशक वहां से भाग रहे हैं और दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि चमक लगातार बढ़ती जा रही है और इस साल जो है और मतलब कि पिछले साल की तुलना में और कहीं बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं? आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया विभूति जी। देखिए, अभी जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, हमारी जीडीपी साइज़ लगातार बढ़ रही है। हम इस समय अब बहुत जल्दी हम जापान को ओवरटेक कर लेंगे। 2027 मुझे लगता है 1-2 साल में हम लोग जापान से बड़ी इकॉनमी, अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और जो आपने बात कही कि आज चीन की जो चीन का जो रूप या स्वरूप लोगों के सामने अब आया है, तो कहीं ना कहीं कंपनियों में ये चिंता है कि उनको डाइवर्सिफाई करना है अपना, तो वो नए जगह तलाश कर रहे हैं। और ऐसे में जो 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो लगातार जो कदम उठाए हैं, तो उनको देखते हुए अब हमने जो स्टेप्स लिए, पीएलआई स्कीम लाए और अन्य तरह के, और जो मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, जो सबसे बड़ा मुझे कारण लगता है, जो हमारे फंडामेंटल, जो स्टेबल फंडामेंटल्स हैं, हम अपनी करेंसी से प्ले नहीं करते। चाइना में वो करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, इंडिया में नहीं करते हैं। तो जो हमने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमने जो और इन्फ्लेशन जो हमने कम करके रखा है, तो उस तरह की जो पॉजिटिविटी है, उसकी वजह से आप लगातार देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी जो हाल में बड़ा एग्जाम्पल एप्पल है। एक टाइम था जब एप्पल हमको ये बोलता था कि साहब हमको ये आप सुविधा देंगे तभी हम आएंगे। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा नहीं, हम सबको एक समान ट्रीट करते हैं, आपको आना है। और एक मजबूरी है आज कंपनियों, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है, तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और जब अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम हांगकॉन्ग से अब बड़ी शेयर बाजार है, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो हम और
ऊपर ही जाएगी शेयर बाजार। जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आपकी शेयर बाजार संक्षेप में में जो एक पूंजी बात और आपसे समझना चाहूँगा और श्रोता भी जानना चाहेंगे कि देखिए चाइना में लगातार 2 सालों से जो उनका जो संघाई कंपोजिट जो उनका इंडेक्स है उसमें गिरावट कहीं ना कहीं से दिखता रहा है और हैंगसेंग में 4 सालों से लगातार। क्या आप मानते हैं कि कोविड से अभी तक उबर नहीं पाया है चाइना? कहीं ना कहीं उसका असर है? नहीं, एक कोविड लोग बोलते हैं, देखिए चाइना से एक तो सही खबर मतलब जो इसके दुष्परिणाम है जी, हाँ, जो लिमिटेड न्यूज़ बाहर आती है उसमें कोविड को भी एक कारण बताया जाता है वहाँ पे। प्लस अभी जो करंट चाइना में जो डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उनका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे ये अनसर्टेनिटी चाइना में बन रही है। और उस अनसर्टेनिटी का नतीजा आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मतलब उनकी जीडीपी भी लगातार सफ़र कर रही है, और वो भी एक कारण है जो ग्लोबली जो आप ये देख रहे हैं जो अनसर्टेनिटी लोग कंपनी शिफ्ट कर रही हैं, तो वो भी एक कारण है। और शायद आप जो बात कह रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही है जी। Siddharth, I would like to also draw your attention to the fact, since we're talking in a larger context, the RBI's MPC meeting started yesterday, and tomorrow at 10, the Governor Shaktikanta Das, he will be addressing the press. So, by all accounts, it is expected, again, like I'm saying, it is expected that the RBI is going to maintain the pause on repo rates. But a bigger picture, all eyes would be now on the commentary. What do you expect from the, in this commentary, especially the central government's, central bank's stance on liquidity and the accommodative stance? I think you've raised a very pertinent question, Anubha, I would say. And I would at the outset also say that the current governor, the RBI under the current governor, Shaktikant Das, has done an excellent job, especially when we had situations like COVID, which were unforeseen events. Yes. It is something which nobody had seen. So they came out with excellent steps at that time to ensure that the economy doesn't collapse. And as you said, we all are expecting that there would be a pause on the rates, but given the nature of the central bank and the way our interim budget has come and things look stable, yes, I think only one thing which is still would be bothering the central bank, one or two things would be their commentary on inflation, which needs to be watched out, especially food inflation, which is still continues to worry us, though government and RBI both have taken a lot of steps. And other thing would be the uncertainty, the global uncertainty, the situations in the like Red Sea, turmoil and all these kind of. So I still expect they could pleasantly surprise us also. Right. Let's move on to the next story. According to the World Bank's Logistic Performance Index LPI report 2023, titled Connecting to Compete 2023, India ranks 38th out of 139 countries. India's rank has improved by 6 places from 44 in 2018 and 16 places from 54 in 2014. An interministerial dedicated team comprising of stakeholder ministries departments has been formed to focus on targeted action plans to improve logistics performance across all 6 LPI parameters such as customs, infrastructure, ease of arranging shipments, quality of logistics services, tracking and tracing, and timeliness. In addition, the National Committee for Trade Facilitation is functioning with a 3-tiered structure. 27 action points have been identified under the Working Group on Infrastructure Upgradation. The Honorable Prime Minister launched the PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity in 2021 and National Logistic Policy in 2022 for improving logistics efficiency and reducing logistics costs. Siddharth, how do you look at this improvement in our ranking, in the LPI index? Because, if you look at the parameters, customs, infrastructure, ease of arranging shipments, quality of logistics services, and all this actually adds up to the fact that the government initiatives, policies are, yielding results. And that is what also may be one of the reasons why the West is looking towards India now in terms of investment. Very rightly said. As we've been seeing since 2014, if we want to be a big manufacturing hub or a big economic power, I think logistics is something, or infrastructure is something, is one of the basic parameters, essentials. Until unless you have that, nobody would like to come to us. So I think that is the reason from day one. I think the focus of this government has been on improving road connectivity, improving airport connectivity. We see now even tier 2, tier 3 cities, the number of airports, the number of aircrafts that India currently flies. So
plus the ports, and as you mentioned, we are acting in cohesion. There is a working group among officials at the level of ministers. Plus, on top of that, there's in 2021 we launched this plan, PM Gati Shakti. So very aggressive plan to cater to the infrastructure, logistic. We want airports, ports, connectivity at one place. If you want to, if supporting, we want to become an export hub. So all that kind of things. I think government constantly all this focus, as Vibhuti ji said, on capital expenditure. So all that is yielding these kind of results. Plus, I think in customs, as we saw customs as a big bottleneck. So we have introduced a faceless scheme there. You need not interact. You need not talk to the exporter or the importer physically. So we're trying to minimize interventions as far as possible and speed up our infrastructure projects. And at this point in the program, it's time to take another break. मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। हाँ, आपका स्वागत है। अल्प विराम के बाद अब समय है एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानने का। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.42%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.28% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% चढ़ गया। उधर हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.34% और जापान का निक्केई 0.11% गिरकर बंद हुआ है। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.5%, जर्मनी का डेक्स 0.35% और फ्रांस का कैक 0.2% गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US markets, all three major US indices ended higher yesterday. The Dow Jones Industrial Average gained 0.37%, the S&P 500 rose 0.23%, and the Nasdaq Composite Index added 0.07%. और एक अच्छी खबर है कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की स्थिरता के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत में हालिया सुधारों की सराहना की है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में श्री पुरी ने आयात स्रोतों में विविधता लाने और गैस मूल्य निर्धारण तंत्र को समायोजित करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद घरेलू ईंधन लागत में गिरावट आई है। इससे पहले ऊर्जा सुरक्षा पर एक मंत्री स्तरीय पैनल में भाग लेते हुए श्री पुरी ने अप्रत्याशित ऊर्जा परिदृश्य के बीच स्वच्छ ईंधन को ध्यान में रखते हुए संतुलित परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को संबोधित करते हुए ओपेक महासचिव हैथम अल घैस ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादन में निवेश की निरंतर आवश्यकता पर बल देते हुए ऊर्जा आयाम के विविध उपायों पर भी प्रकाश डाला है। तो सिद्धार्थ जी, देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दुनिया में इतना संकट आया लेकिन फिर भी हमने अपने यहाँ कीमतों को स्थिर रखा। आपने बिल्कुल ठीक कहा विभूति जी। आप देखें, पेट्रोल डीजल पहले खबर आती थी कि बहुत जल्दी प्राइजेस चेंज होते थे, और ये जब से ये 2014 में हालांकि ये सरकार आई तो इन्होंने पहला बड़ा कदम जो लिया था वो डीरेगुलेट किया था कि सरकार डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें इनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगी। खासकर डीजल पे बड़ा फैसला इस सरकार का, कुछ पहले जो शुरुआती फैसले थे उनमें से एक बड़ा फैसला था, और ऐसा करना आसान नहीं होता है। जब आप फ्री करते हैं प्राइसिंग तो जैसा कि इंटरनेशनल जो भी क्रूड ऑयल रेट्स होते हैं उसके हिसाब से प्राइस फिक्स की जाती है, लेकिन कई बार ऐसा समय आया जब चुनौती आई, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर गए, तो ऐसे में भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अपने जो रेट्स हैं, एक्साइज रेट्स, वो कम किए। मुझे याद है 1-1.5 साल पहले 10 रुपये तक एक साथ पेट्रोल डीजल पे घटाए गए, जब ऐसी स्थिति आई कि जब प्रेशर था बहुत। तो सरकार ने कहीं ना कहीं अपना जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वो इतने बेहतरीन तरीके से किया कि लोगों पे उसका जो है असर, जो
दुष्प्रभाव था वो नहीं पड़ा। और कहीं एक समय ऐसा भी आया कई जगह एक लंबे समय तक जब तेल कंपनियों ने भी वो भार अपने ऊपर भी लिया। अब आजकल हम देख रहे हैं पिछले 5-6 महीने से स्थिति सुधरी है, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, तो वो शायद जो घाटा या जो उन्होंने उस समय जो पब्लिक को जो सुविधा दी तेल कंपनियों ने, शायद वो अपना प्रॉफिट या वो अब वो रिकूप करने में भी लगे हुए हैं। तो ऑल इन ऑल पब्लिक को कोई बहुत कष्ट नहीं हुआ, तेल कंपनियों को भी कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आया। और तीसरी एक अच्छा काम हमारे लिए जो बीच में फ़ायदा हुआ, जब हमने रशिया से सस्ता ऑयल खरीदा, जब रशिया से वो ऑयल हम नहीं खरीद पा रहे थे तो हमें नए जो है जगहों से, नए देशों से हमने वो किया और हमने स्मार्टली मार्केटिंग की अपने to minimize our cost, because 85% of the oil that we get in India is imported. Right. Siddharth, the Minister, Mr. Puri, also stressed the need for a balanced transition from conventional to cleaner fuel amid the unpredictable energy landscape. Like you were just discussing earlier, we were discussing about what is happening in the Red Sea right now. There's a conflict in the Middle East right now. So in all this, when he talks about a need for a balanced transition from conventional to cleaner fuels, that becomes very important. And just yesterday Prime Minister Modi also spoke at the International Biofuel Alliance, and in the interim budget also there's been a lot of focus on the strengthening the structure, EV structure, and transitioning and green fuels. See, as you said, in the budget also we're talking about the EV, and I think why they're talking about a smooth transition, because it shouldn't be erratic, it shouldn't be sudden, because suddenly we move out from petrol cars or diesel cars to EVs, because currently still we don't have that structure for EVs. EVs would also require large amount of electricity if suddenly we turn to EVs. So that is why I think we are talking about a seamless transition. Plus, as you said, in the budget we are also talking in a big way about solar over house tops, rooftop solar panels. Especially for the people at a certain level, because we believe that they are not sufficiently provided with energy. Plus, energy would also become a kind of they would also be able to sell in power to the grid. So in a way, all that, plus also focus on bolstering our EV infrastructure. So you can't do it overnight. So I think that is why they're talking about seamless. It shouldn't be disturbing the entire structure. Right. Let's move on to commodities. Oil prices rose more than 0.5% for the third straight day. In intraday trade, Brent crude was trading 0.6% higher at $79.06 per barrel, while the US West Texas Intermediate crude was trading up 0.64% at $73.78 per barrel when reports last came in. Siddharth, at this, while we're talking about the India Energy Week, there the International Energy Agency has said that India is expected to be the largest driver of global oil demand growth between 2023 and 2030. So what do you make out of it? Because, India is going to be the largest driver of global oil demand, which is obviously also indicating the speed at which the economy is growing. Yeah, so I just wanted to say so it is also very positive. They are also reflecting a very positive picture of India, that India would be why India would be the biggest consumer, or we will be consuming the maximum because of our growth, the growth trajectory that India has been growing. See the amount. So I think it is straight away linked to our economic well-being and the growth trajectory that India is currently clocking. But then we also need to focus on the fact that, if we are going to be the biggest consumer or one of the biggest consumer, we also need to focus on refineries, because if we going to have that much demand, we also need to refine the crude. No, sir, I don't think we have any challenges on the refining side. That I think we have a very excellent infrastructure. So I don't think India has any challenges as far as its refining infrastructure is concerned. सोना चांदी का हाल जानते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना 113 रुपये की गिरावट के साथ 62,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी 411 रुपये की गिरावट के साथ 70,183 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में अंतिम समाचार मिलने तक दिन के कारोबार में सोना कॉमेक्स पर $2,048 और 80 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।
And that's all we have time for in this program. Thank you so much for coming to the studio, Siddharth, and discussing the important stories. धन्यवाद. Thank you. And before we close, look at the headlines. Sensex slides 34 points to close at 72,152. Nifty settles 1 point up at 21,931. India improves 16 places in World Bank's Logistics Performance Index Report 2023. And fuel prices kept steady in India despite global turbulence, says Energy Minister Hardeep Singh Puri. And that's it in this edition of Market Mantra. Bye-bye. Namaskar. नमस्कार. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Market